Okay, so many of these equations we have studied already actually in different forms. And we know this thing as well, that Q is equal to rho, and rho is, you already know that it's volume, charge, density. Okay, and we already know that electric field okay, so here we can replace this one, so we can write okay, so this is basically Gauss's law, and we can say it's equation number 1 here, and this is a Gauss's law in electric field. Okay, so electric field. Now if you move further, for the magnetic field, we know already this thing, this equation. And this equation I called it number 2. So magnetic field is continuous. It's not like negative or positive charges. Okay, so magnetic field is continuous from south to north. Okay, something like this. Now we also know uh, Faraday's law of electromagnetic induction. That is okay. And we already discussed about the Maxwell Ampere law. That is a modification of Ampere's law by Maxwell. That is so we know that okay, so that current, displacement current, was introduced by the Maxwell this term, and you can write like
you remember that article, I mean, you can understand this thing was introduced. Okay, so we know that already B is equal to H. Further, we can dealing with the closed surface, so you have to write here C. So if we write this equation like this, then it will be okay. Now, we know this concept probably from the previous courses of electricity, magnetism, the current density. Current density, which is J is equal to I over A, current over area. Let's suppose this is a conductor or wire here. This is the area and the current is flowing through. And you can say it's a macroscopic concept. And if we say, or if we see this one in microscopically, we can mention like this is dA and the current definitely is I. And only difference is area. Macroscopically we take A as area and microscopically with small portion is dA. And the normal case we write current density is equal to I over A, or current is equal to J. So current density is a vector quantity and the current is not a vector quantity. Okay. Now, if we see the things microscopically, then this equation simply can be written like this. Okay, so that can be NdA. Now, we know this equation here. Okay. So this thing, this I, we can substitute here. Okay. So this I can be substitute here. Okay. So if we substitute here, then this equation will be like okay. So this is over the surface and this one is also over the surface. Okay, so we can write like this.
And this one we call it equation number 4. Okay. And this current density actually is somehow it's important, and the unit for this current density is, so it means that ampere over meter square. Okay, amperes for the current and meter square for the this one. So units of current density is ampere over meter square. Now, uh, if we want to convert Maxwell's equation from this integral form, after conversion and everything, we will summarize as well these equations, what is differential form, what is integral form. Okay. At the moment, maybe you feel that it's scattered, but we will summarize. So from integral to differential form, so for this one, we have to like line, surface, and volume. These things which we already studied actually can be line integral, can be surface integral, can be volume integral. Okay. And then similarly in the differential form as well. So if we move further, so we want to convert Maxwell equations, which is 1, 4, 1, 2, 3, 4, which we discussed just now, in the differential form. For this one, we need to uh, use vector differential operator, or you can say vector calculus. And so vector differential operator here, uh, we know already this. Okay, so this is, you can say it's has X, Y, and Z. There is no time here. Okay, so that is rate of change of the direction. Rate of change of direction actually. Uh, we can find out with this equation, with this kind of relation. Change of direction. X component, Y component, and Z components. And this symbol actually is called nabla, if you know already, or in general we call it del. Nabla is symbol which is used for this vector differential operator. Okay. We know this one is equal to, this is divergence. This is divergence of A. I'm not going in detail of what is divergence. I'm assume that you people already know what is divergence curl and this kind of uh, things. I'm just
uh, trying to conclude some equations here. Later we'll see the physical significance as well. अच्छा, ये जो है ये आपकी कर्ल ऑफ ए, and this is gradient of phi. ठीक है, that is scalar. This phi is scalar. Okay, so these things I mean these equations are having some importance when you want to convert from one form to another form. ठीक है, so now if you convert line integral into surface integral. How to do it? If you have like this, any a vector, and it has to be equal to NDA. Okay, so uh, if you want to convert the line integral into the surface integral, then this is the equation actually. And we call it Stokes theorem. ठीक है, तो ये आपका जो है ये स्टोक्स थ्योरम है. A is any vector, and if we want to convert line integral into the surface integral, we have to use this Stokes theorem. Further, if you want to convert surface integral to volume integral, then okay, so A is any vector here, and if we want to convert at some stage from surface integral to the volume integral, then we have to use this equation, and this is basically a divergence theorem. This is basically divergence theorem. Now these two relations are important. जब भी हमने conversion कोई करनी है Stokes theorem और divergence theorem को use करना पड़ता है. ठीक है, अगर आपको याद है अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी which was a Gauss's law in electric field, और ये इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 जो है
that is okay. अब इसमें have to apply these things. If we use the divergence theorem here, then we can write like in place of AD is equal to rho dV. Now both sides we have volume integrals. Okay, and if we have volume integrals, then definitely we can write in the okay. So we call it equation number 5. First 1, 2, 3, 4 equations, and after that we convert uh, from integral to the differential. We want to convert actually, and that's what we are doing now. तो उसके बाद आप ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 ली थी, ठीक है, एंड अब जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड की थी, एंड इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस पे भी कोई थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. देयर आर टू थिंग्स, दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें. एक तो आप इस फॉर्म में लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है. इफ देयर आर मैग्नेटिक चार्जेस, some magnetic charge, we assume that there are some magnetic charges, so this equation will be like in case of electric field. ठीक है, तो इसको हम अगर तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक चार्जेस, ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे रो एम. ओके, so rho m, basically rho is a volume charge density, you already know. और इसको हम लिखेंगे rho m dv. ठीक है, now we apply the divergence theorem. अगर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देन डेफिनेटली you can write in this form. ए की जगह पे बी आ गया है, ठीक है, और डी वी. ऑब्वियसली इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल बी इज इक्वल टू दिस वन रो. ठीक है,
I give the name 6A. Okay, not 6 but 6A. Okay, so we see further. तो एक्चुअली हम जो पढ़ते हैं और जिसे जाना जाता है दैट इज P and DA is equal to 0. ठीक है. So if we apply the divergence theorem to this one, or we can simply say if there is no magnetic charges, so that would be 0, and the last equation will be is equal to 0. That is equation number 6, I call it. Okay, there are two possibilities. In case of this magnetic field equation, if we consider there are magnetic charges, then this equation will be of this form. And if you consider that there is no magnetic charges, then this form. So mostly in case of electromagnetic radiation, we use equation number 6. Okay, in some cases, we assume that there are some magnetic charges. Now, this we did with equation number 2. And now we move to the equation number 3. Okay. So equation number 3 भी हमने अभी देखी थी. Equation number 3 क्या है जी? EDL, और ये बेसिकली फैराडेज लॉ है. ठीक है. अब we are having surface triangular and closed loop with line integral. So it means we have to apply the Stokes law. Okay, divergence जो है वो सरफेस टू वॉल्यूम आ जाता है, और जो आपका इंटेग्रल स्टोक्स थ्योरम है उसमें आप लाइन इंटेग्रल टू सरफेस इंटेग्रल जो है वो करते हैं. एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा. Okay, so question number 3, and we apply Stokes law or theorem. Okay, that is from line to surface. ठीक है. और इस सूरत में we can write the above equation this side, del cross E. ठीक है. और DA is obviously is equal to
curly b over curly t n a। ठीक है, अब दोनों साइड पे आपके सरफेस इंटीग्रल है। तो अगर दोनों साइड पे सरफेस आपके इंटीग्रल है, डेफिनेटली यू कैन राइट इन द फॉर्म इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 कह देता हूँ। ठीक है, पहली 4 इक्वेशन थी, उसको हमने स्टडी किया और फिर उन 4 इक्वेशंस को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंस इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, छोटी छोटी जो है जो भी आती है। बट कीप रिमेंबर कि ये जो इंटीग्रल फॉर्म है और जो डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है और कौन सी इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन बनती है। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। Sorry, question number 4. 7, we have this one, last one. We're converting. That is the last equation. The equation number 4 जो है वो है आपके पास ओके। तो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 4 और यू कैन सी हियर, ये जो है ये आपका लाइन इंटीग्रल है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम द लाइन टू द सरफेस, then you have to use Stokes theorem. Okay, so if you write in the form of or if you use the Stokes theorem, especially for the left hand side, this one, then it will be like place of AH, and this is the right side here as it is. So if this is the right side as it is, so we can see this is surface integral, this is surface integral. We can write this equation in the form okay. And if we write this equation in the form, I can, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 8 कह देता हूँ। That is equation number 8. So what we have now, differential form of Maxwell's
equations, that is del dot d is equal to रो, ओके, जिसको कि हमने कहा था कि 5 नंबर है, और उसके बाद थी del b, जिसको हमने कहा कि ये 6 नंबर है, के बाद क्रॉस, जिसको हमने कहा था कि ये 7 नंबर है, उसके बाद है करली, सॉरी डी, इट हैज टू बी डी हियर, करली डी ओवर करली टी, और जिसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 8 है। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी एक और फॉर्म भी है, दैट इज इफ देयर आर मैग्नेटिक चार्जेस, ठीक है, जिसको हमने 6a कहा था। ठीक है, सो मोस्टली दीज 4 इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट। वो जो पांचवी वाली इक्वेशन है, दैट इज फॉर सर्टेन केसेस। नाउ अगर हम दोनों का कंपेयर करें, दोनों को साइड बाय साइड लिखें, इन इक्वेशंस को, जो इंटीग्रल फॉर्म है और जो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है, इट विल बी लाइक फर्स्ट थिंग Gauss's law in the electric field, ठीक है, on this side I'm writing the differential form, and on this side I will write the integral form. How do you write it? This one is equal to rho, ठीक है। अब इसकी जो है आपकी डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज ठीक है, Gauss's law in electric field or electric field, and we just learn these integral equation which we already studied actually, and we converted into the differential form. Further, Gauss's law for magnetic field, ठीक है। So इसकी जो differential form है we just studied is equal to this one, और जो इसकी integral form थी that is equal to 0, ठीक है। Is a Gauss's law for magnetic field, and if we move further,
ओके, उसके बाद आ जाती है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस फॉर्म में इसकी जो हमने डिफरेंशियल फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी थी, दैट इज, ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। एंड इसकी इंटीग्रल फॉर्म में कर्ली बी ओवर कर्ली टी एंड टी ए। तो ये थी फैराडे इक्वेशन, इसकी दोनों फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। उसके बाद एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। जो एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, जो मॉडिफिकेशन की थी एम्पेयर ने, सॉरी मैक्सवेल ने एम्पेयर्स लॉ में, सो दैट वाज लाइक, इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है और जो इंटीग्रल फॉर्म है पी डी एल इज इक्वल टू डी। Okay, so these four equations we studied today. It's integral form, differential form, ठीक है, और इसकी जो है physical significance, that we'll see in the next lecture, ठीक है, और important to know कि इसकी conversion कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसकी physical significance क्या है, वो जो है वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, इनकी physical significance क्या है। It's not in that much detail, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो होगी, ठीक है। और if you have any question from today's lecture, so you can ask. 8 students are present now, I think. ये हाफिजा जो है ये क्लास लेती है कि she was there last time or not? कोई बताएगा मुझे? सर इसका तो पता नहीं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, एक चीज़ पूछनी है आपसे। सर वो असाइनमेंट है हफ्ते वाले दिन, मतलब उसकी सबमिशन की डेट, तो हाँ सर वो जी, काइंडली आप मंडे तक कर सकते हैं सर, ज़रा मुश्किल हो रही है करने में। चले मैं देख, मंडे को क्या डेट आ रही है? मंडे को 3 अक्टूबर। ठीक है, तो अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुदस्सिर से ठीक है डिस्कस सर, कर लें। सर आप ऑफिशियली जी ठीक है सर, लेकिन वो आप सर ठीक है, डेट कर दें, 2 दिन और दे दें, आपको मतलब मिल ठीक जाएगी। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये हाफिजा जो थी, ये थी लास्ट क्लास में कि नहीं?
सर कोई आइडिया नहीं, मेरा से पीएचडी की है। अच्छा अच्छा, पीएचडी की स्टूडेंट है। और हाफिज मोहम्मद अलीम का आइडिया है कोई? ये 13 स्टूडेंट जो हैं ये हैं एनरोल, लेकिन ये 13 कभी पूरे हुए नहीं है। व्हाट्स द रीजन? आसिफ रजा। आसिफ रजा इज देयर? हेलो जी। सर, मेरा एक्चुअली वो माइक म्यूट पे था तो वो ठीक करने में देर लगी। अच्छा अच्छा। सर अ, हाफजा पिछली क्लास में नहीं थी। अच्छा, जी। ग्रुप में कितने हैं आपके? ग्रुप में कितने आपने ऐड किए हुए हैं नंबर? सर ग्रुप में तो मोस्टली सारे हैं, और जो मुदस्सर भाई ने बनाया हुआ उसमें थोड़े हैं, लेकिन मेरे वाले में ज्यादा है। लेकिन मैसेज किया था तो रिस्पॉन्स नहीं देता मतलब। नहीं, कितने हैं? कोई काउंट कर सकते हैं? मतलब कितने हैं? कोई 12-13 हैं? सर एक सेकंड, अभी मैं आपको देख के बताता हूँ। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सर 12 मेंबर हैं इसमें। 12 हैं। लेकिन 12 कभी क्लास में आए नहीं पूरे। सर अब उनको क्या कहा जा सकता है। ठीक है। प्रॉब्ली आई विल आस्क मुदस्सर के एक आपके साथ ना फिजिकल कोई इंटरेक्शन कर ले। एनीवे, सो द थिंग इज के ठीक है, आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है? सर तो एक्सक्यूज मी, हाँ जी। सर ये जो आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स है ना, तो जब वो हम रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने के लिए प्ले करते हैं तो वो कहते हैं कि यू डोंट हैव परमिशन टू ओपन दिस, प्लीज़ आस्क योर ऑनर या इस तरह। तो सर वो सेटिंग्स प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, शायद उसमें कोई इस तरह मसला हुआ है। ठीक है, आई विल चेक दैट वन। दूसरा ये कि मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। डू यू पीपल नीड इट और नॉट? क्योंकि मैंने कुछ किए थे शुरू में वो एलएमएस पे। सर ज़रूरत है ऑब्वियसली यस सर, सर। कर दिया करें। अच्छा, ठीक है ठीक है। चले ठीक है फिर। लेक्चर है ना, अपलोड सॉरी। कर दें और उनकी परमिशन भी दे दें हमें। सर उनकी परमिशन भी दे दें और लेक्चर भी अपलोड कर लिया करें, ताकि हम कोई ठीक भी है बाद में चेक करते हैं तो हमें पता चल सके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल ट्राई टू चेक इट नाउ। ठीक है, चले ठीक है फिर, आई विल साइनिंग ऑफ नाउ। ठीक है, वो असाइनमेंट की डेट जो है वो भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके फिर। सर जी थैंक ठीक है, शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।